Commentators Rahul Juneja and Dilip Kumar. So very good morning, Dilip. TCC Season 6, Day 2. What do you make of this encounter? हाथ फंसा हुआ है यार तुम So yes, Rahul. What की मेरी आवाज? अरे दे भाई माइक की आवाज ना आ रही. कहाँ होना? So yes, thank you, Rahul. And yes, what a day! What a chilling day! Second day of this tournament, TCC 6. और पहला मैच yes between these two biggest euphorians and finishers. Let's see who clinched this match. We are ready. The first ball, Manish. Starts with the white. And yes, captain himself, Kapil sir, head and strike. कल का दिन उनके फेवर में नहीं रहा, but let's see इस दिन की शुरुआत कैसे करते हैं. Manish sir starts the first over. Deft touch. That's good stuff. Off the mark, straight away. Gets a straightish delivery, just opening the face of the bat. Works it away towards the offside, gets a single. That's sensible. And yes, yesterday, he was slightly off color because if you look at last season, and if you look at the aggregates of all the players, Kapil Gupta, the skipper himself, was a run scoring machine last time around. In fact, and just as we say that, we didn't even realize there was a run out affected. So the first wicket has fallen for VSPK courtesy a run out. How unfortunate is that? And didn't even realize. हाँ जी निशा और दूसरी टीम VSPK है ना VSPK Absolutely, Rahul. And first damage to finishers. And this is what we were talking about Kapil sir. The way he connects with the ball, the power he generates. Is a hard hitter of, especially although we are playing with the tennis ball, he must be hard hitter with the season ball as well. Talking about hard hits, there's one. Straight away, Sagar gets going off the mark. And yesterday, it looked to be in some sublime touch, Sagar. What a match he had yesterday, day one of TCC Season 6. A hint of width, just throws his bat at it, thrashes it towards the offside. There was enough protection. Satyam Malik himself standing at sweeper cover. So, just reminding you that we are within the power play overs. So, the first over being bowled by Manish. That's a full toss. He wanted to heave it away towards the onside. Was looking to that region towards fine leg. Missed out there. He would be really disappointed with that, Kapil Gupta. And Yes, down the leg side, good work by Nisha behind the wickets. And Rahul, if we talk about Manish sir, he's a experienced candidate, and the number he's wearing, jersey number 10. Indeed, it's a special number, number of Tendulkar. And the amount of experience he carries himself. that's a good looking stroke.
And he's finally off the mark. He'll be relieved. Gets a single, thrashes at it, plays it towards deep point. And yes, it's a special number, and his team would be hoping that he can provide something special to his team. That's why he's been credited with bowling the first over. It's always crucial, be it the starting overs or even in the dead. Sagar, meanwhile, is predominantly very good through that offside, and he's picked the gap here. The fielder does really well. Excellent work in the deep. That is brilliant fielding. Never easy. Had a lot of ground to cover. Came in running, attacking the ball, and coming in towards the deep extra cover region. Saves at least 1 run for her team. That's brilliant stuff. So 6 runs coming off that over, and VSPK finishers are 6 for 1 after the first. Dushyant करेगा bowling. And Rahul, this girl always been electric in field. She's very quick, wonderful athlete. Yes, she's everywhere. She's a live wire in the field, and that's the essence of this tournament. Remember, this is a very unique tournament where you see, mixed bag. There are 6 female players in a team and 5 male players. How often do you see that? In all honesty, I haven't seen that anywhere. And that really tells you a lot about this tournament and the intensity with which these players walk out to the middle and give it their all every single time. No matter what the situation is, no matter what's going on, more than victory, they're always switched on. It's all about every single delivery. They're giving their 100%. And also, something I've spoken about a number of times, we tend to forget that these are not seasoned cricketers. They work really Absolutely. hard every single season to come out for this particular tournament and fight it out. And no matter who wins, we've had 6 seasons, we've had a lot of winners, and every single time the winners, they were the deserving champions as well. True, Rahul. Well said by you. And in fact, from past 4 seasons, and now there is bowling change. In fact, for the second over, Dushyant has come. He's he's a physical education teacher of LPS, and it's a boundary on the very first ball. So if you bowl like that to Sagar, you're going to disappear. He favors that offside, especially through the extra cover region. The ball sitting up nicely for him, had enough time to reach out for it, and just extending his arms, plays it through the offside, gets another boundary. That's good stuff. That's excellent stuff. You see generally people swinging towards the onside. And Sagar is so different. But when he gets the opportunity, he plays down the onside too. He's so good all along the ground, and that's a brilliant running between the wickets. Good awareness showed. That's why I said you've got to be switched on at all times. And that is why VSPK were the champions last season as well, because they don't fail to seize an opportunity. Every single run matters in this format. Just 12 overs apiece. And that is important, converting your singles into doubles and doubles even into triples. That is where VSPK, I think, were brilliant yesterday. So, in the middle overs yesterday, VSPK initially, didn't get off to a very good start. But the middle overs, they carried along nicely. Dushyant ready to run in. That's Ibra way towards the onside. There is a fielder. He can't get there. That's 4. That's a boundary. That's another good shot. Shorter in length. Dushyant has an interesting bowling action. But at the moment, what he's doing is he's bowling too short to Sagar. And he has got enough time to swing it hard to the onside this time around. Another boundary. He started well. He's showing his form. He's had a good start to the tournament.
And he's going along nicely. Moves to 14 in quick time, 14 of just 5 deliveries. This is a brilliant start for him. So joining me is our co-commentator Dilip Kumar. Dilip, a good start for VSPK finishers here. जी हाँ राहुल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आप शुरुआत की बात कर रहे हैं, ये जहां से कल खत्म किया था ना, ये वहीं से शुरू किया है आज। और कल जिस तरह की बल्लेबाजी थी, आज मौका एक बार फिर से उनके पास है। और 12 ओवर का ये मुकाबला वीएसपी के फिनिशर्स के लिए। और ये जय वीरू की जोड़ी है इस टीम की। और इस बार बढ़िया कैच, ठीक करता हुआ वो गेंद, और कहीं ना कहीं नजर लग गई है इस जोड़ी को, क्योंकि कल That is a big wicket. That is a massive wicket. जब बोल रहा हूँ तो कम करिए। जब बोलना शुरू करूँ ना, सुनो मेरी बात, जब बोलना शुरू करूँ ना, मेरे को भी पता है कब गाना चाहिए। जब बोलना शुरू करूँ तब खुद कम कर दो। मेरे को लगता है भाई, फिर मेरा क्या काम है? आप ना हमारी तरफ देखो भाई, थोड़ा दिमाग खोल के, कान खोल के, आंखें खोल के काम करो। मैं कह रहा हूँ जब बोलना शुरू करो तो धीमे कर देना। चला लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी पता है भाई। सुनो तो, तुम जब चला रहे हो चलाओ, जब बोल रहा है तब कम करो। कल नहीं किया था ना तुमने? थोड़ा खुले दिमाग से देखो आसपास। मैं माइक से जब आवाज आ रही है अनाउंस कर देना 17 को। And that is a massive wicket in the context of the game. The skipper has departed, and it's unbelievable. He hasn't got going so far in this tournament. 2 failures in 2 matches. That's really hard to believe. The leading run scorer for VSPK last season. They're 17 for 2, and they've been rocked after the second over. As Kapil is back in the hut, and the new batter is Risha. Richa Victor is the new batter. She's at the non-strikers end. Start of a fresh over. Aditi into the attack. And that is a brilliant hit. And I tell you what, that wasn't too far away from the fielders. 2 fielders converging. Both of them getting around it, and they get a couple of runs. So 2 more added to the total. That was a good hit. Again, sitting up nicely for Sagar. He has a swing at it. And Dilip, going by the play so far, 6 hitting hasn't been an easy task for all these batters. Sagar is batting on 15, thrashes at it.
any width on offer, and he'll exploit that region through that extra cover region. Excellent effort. Brilliant effort by the fielder. Definitely saved a boundary for his team. Could be a third. Could be a run out as well. Gets away with that one, does Richa. Sagar had ideas of coming in for the third. VSPK at the moment they're reeling. They're 21 for 2. What they need is a partnership here. They desperately need one, and a big one at that. That's a very interesting shot. That's gone straight towards the long on region. That will be 4. And that was such a good shot. That reminded me of that 6 that Virat Kohli hit. On the back foot, never easy, almost losing his balance. Adilip, if that doesn't remind you of that 6 that Kohli hit of Haris Rauf, I don't know what will. Meanwhile, swings it away towards the onside, finds the fielder on that occasion, doesn't take a single. That's a dot. Sagar wants to keep as much strike as possible. He's moved to 23, and look at that strike rate. 230 is the strike rate. Advances down the ground once again through that extra cover region. This could be 4. This time the fielder can't stop it. That's 4 more. So final delivery of the over coming up, and 12 runs of it already. Sagar has quickly moved to 27, and this is exactly what separates the good teams from the champion sides. VSPK in trouble at the moment, but Sagar is not backing down from a fight. He's going at it. He's scoring at a good clip as well. Final delivery. Makes room again, thrashes it away towards the offside. Sweeper cover this time. Satyam tends to it. Makes a throw at the non-striker's end. That's a single. He will keep strike. That's the end of the third. A good over that for the batting team. In fact, what's happened there, there's overthrows there. So he's come back for the second. And that's a run out. That is a run out. It's a comedy of errors, but that's another wicket that VSPK have lost just as a partnership was building. They've lost one. ठीक है लाइट बढ़ा थोड़ा सा कम कर लाइट बस ऐसा दिखना चाहिए ना हर बार ठीक है
क्या लाए हो आज? तो 3 ओवर 31 और 3 विकेट, लेकिन वन वे इस समय चलती हुई फिनिशर्स की पारी, और उसका सारा दारोमदार जो है वो सागर ने उठाया है। और 29 रन, 12 गेंदे, 4 बाउंड्रीज, 241 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, और कल जिस तरह की पारी खेली थी उस फॉर्म को एक बार फिर से यहां बरकरार रखे हुए। और ये एक प्लस पॉइंट होने वाला। फुल टॉस, ये गेंद नीचे, खिलाड़ी थोड़ा सा दूर रहते हुए घूमी टप्पा बढ़ने के बाद, और थोड़ा सा मिस जज भी, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट ये बेहतर होती है और मौका बनता है रन आउट का। And I think a golden opportunity has been missed there. This is the partnership that changed the game for them yesterday, and they missed a run-out opportunity. And to top it all off, that's a no ball as well. It will be a free hit delivery. Remember, they were in a similar position yesterday, VSPK, and these two came in together and changed the course of the game. फ्री हिट और क्लीन बोल्ड, लेकिन ज्यादा जो खुशी है वो So, not that it matters, it was a free hit delivery. Well, he had to go for it. He swings it hard, but the ball straight away crashes into the stumps. So 35 for 3 at the moment. What a start we've had to the fourth over. Interesting. Everything happening. It's drama out there at the moment. Sagar is going along nicely, batting on 29. Lavish has just joined him, batting on 3. And yesterday, these two joined forces. And especially, we talk about the crucial middle overs. And that's where they set a template, these two. Generally, you don't see batting teams do that in the middle overs. बल्ले के नीचे वो गेंद उठा कर मारा है, और यहां मिसफील्ड के चलते एक और बाउंड्री यहां पर मिलेगी। और ये ताकत है फिनिशर्स की, क्योंकि कल जिस तरह से एनालाइज किया था हमने, 12 ओवर का ये मुकाबला है। शुरुआत में भले ही आप विकेट गवा दे, लेकिन जो मध्य ओवर्स है ना, उसमें किस तरह से आपको डोमिनेट करना है, वो कल वाली इनिंग के अगर आप हाइलाइट्स उठाएंगे ना, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि क्यों इस सीजन 6 की फेवरेट मानी जा रही है ये टीम। So that's what pressure does to you as a team. And that is where VSPK are so good at. They're so good at putting the pressure on the opposition. Somebody of the caliber of Nidhi making that misfield. And Sagar is so good to watch through that offside, especially through that extra cover region between covers and long off. He's so strong through that region, and Lavish now on strike. VSPK, they would believe that these two once again will get the job done, just like they did yesterday. एक प्लस पॉइंट ये भी कह सकते हैं राहुल भाई कि वो जो हिटिंग जोन है ना सागर का, उनको ज़्यादातर बॉल्स आज भी वहीं मिली हैं जहां वो कंफर्टेबल हैं खेलने के लिए। और जिस तरह के शॉट्स लगे हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हिटिंग जोन में बल्लेबाज को गेंद देते रहेंगे तो 5 बाउंड्री और ये 34 रन फिलहाल इस पारी के, और कल 60 रन बनाए थे, 2 विकेट हासिल किए थे, एक टोटल डोमिनेटिंग पारी, और उस पारी को एक बार फिर से यहां से डोमिनेट करते हुए। लेकिन सवाल यही है कि आपका अब गेम प्लान क्या है। वीएसपी के फिनिशर्स जो है ना, वो इस समय डोमिनेट करते हैं, और ये शॉट देखिए, बॉलर के सर के ऊपर से उठाकर मारा है, और एक बार फिर वही चीज, थोड़ा सा आगे रखा गेंद को, और वो फ्लो ना आसान हो जाता है, खासकर टेनिस बॉल पे। लेदर की होती तो थोड़ा सा आपका बॉटम एंड हिलता है,
ग्रिप लूज होती है, लेकिन टेनिस में उतना मुश्किल होता नहीं है और आसानी के साथ इस समय शॉट्स आते हुए। That's a very valid point that you make, Sagar. Making the bowlers bowl to the length and the line he likes, he favors. Because if you look at it, the best part is he's so good through both the ends, both the sides of the ground, and anything that has been shot, he's latched onto it, heaved it away towards the onside, and he's made the bowlers bowl to his favored line that is just outside the off stump, and because the bounce sits up nicely for him, it's not really coming onto the bat. He can wait for it, and even on the back foot, if you just transfer your weight, just throws his hands at it and plays it through that extra cover region where more often than not he finds the gaps. So that is a very good ploy. That is smart thinking. And meanwhile, the end of the fourth over, VSPK finishes. They are 43 for 3 at the moment. And they're once again looking at a big total. LPS need to find a breakthrough here. If this partnership is not broken, then they're in for trouble. जी हाँ बिल्कुल। और पिछले ओवर की अगर आप बात करेंगे तो 12 रन उस ओवर से आए हैं और प्लान ज़रूरी है। प्लान ए पूरी तरह से आपके लिए फेल हुआ है, लेकिन प्लान बी क्या है? आप थोड़ा सा अगर गति खींच लेंगे ना बल्लेबाज से, तो फिर वो बाजुओं की ताकत आप कितना लगा सकते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। और कल यही हुआ था, शुरुआत में आपने ज़्यादा गति दी नहीं थी, तो बल्लेबाज का जो कॉन्फिडेंस होता है ना शुरुआत में आते ही हिट्स लगाना, वो खेल बदलता है। और शुरुआत में आपने गति दे दी है, तो आप ये देखिए कि 4 ओवर में 43 रन, विकेट भी गिरे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक छोर से जिस तेज़ी के साथ रन आए हैं, वो दर्शाता है कि एक माइंडसेट के साथ उतरे हैं। क्योंकि जब आप रन्स आपके बल्ले से आते हैं ना, तो आपका गेम सडन चेंज हो जाता है। आपका सोचने का तरीका, आपका ग्राउंड को पूरा पढ़ने का तरीका, कहाँ फील्ड है, कहाँ गैप्स हैं, वो फिर आसान होता चला जाता है। और जब आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना, फिर गेंदबाजी कर रही टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इस बार डिप करती हुए वो गेंद अच्छे से मैनेज किया, रनिंग बिटवीन द विकेट, ये प्लस पॉइंट रहा है कल भी और आज भी। क्योंकि जिस तरह से आप रन्स बना रहे हैं, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं गेम प्लान के तहत आप उतरे हैं और आप जानते हैं कि आपको किस तरह से डोमिनेट करना है, ना केवल पारी को बल्कि विपक्षी टीम को। और उसके लिए जो प्लान था, उस प्लान पर पूरी तरह से बेहतर अंदाज में एग्जीक्यूट किया है। पेपर्स पर आप भले कितने स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ऑन द ग्राउंड जब आप मैच खेलने उतरते हैं ना, और ऐसे में जीत के साथ जब आप वापस आते हैं अगले दिन, तो कुछ इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है, खासकर बल्लेबाज से। मैन ऑफ द मैच भी रहे पिछले मुकाबले में, और एक बार फिर से अपनी दावेदारी उसी तरह से पेश करते हुए जिस तरह कल के मुकाबले में प्रदर्शन रहा था। और ऐसा नहीं है कि सभी गेंदें खेली हैं या सभी गेंदों पर बड़े हिट लगाए। जो अच्छी गेंदें उनको सम्मान भी दिया, लेकिन ख़राब गेंद 6 बॉल का एक ओवर होता है, उसमें 2 या 3 गेंद आपको ऐसी मिलती है जिसमें आप अपने हिसाब से या आप कहें अपने पसंदीदा शॉट्स जो है आप खेल सकते हैं। और आज वही हुआ है। सागर ने एक बार फिर से डोमिनेट किया है पारी को, और साथ दूसरे एंड से भी मिला। एक बार फिर से पैर देखिए कहां लेके गए हैं और बाजुएं खोली हैं। अच्छा शॉट, आउटफील्ड थोड़ा गीला है, गेंद उतना तेजी से जाएगा नहीं। जितना बार आउटफील्ड में गेंद जाएगा, गीला होगा, जो हार्डनेस है वो कम होगी, बल्ले पे आएगा जरूर लेकिन उतनी तेजी के साथ जाएगा नहीं। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं सोचना होगा। और अब 5वां ओवर ये चल रहा है, गेंद थोड़ा सा पुराना हो रहा है, गीला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो शुरुआती हिट्स आपको देखने को मिले थे ना, उसमें अब सिंगल्स और डबल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से बल्ले के नीचे वो गेंद घुमाया जरूर, बैट घूमा, रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतरीन। एक बार फिर से ये स्ट्रेंथ है इस टीम की, उनको पता है कि कहां आप किस खिलाड़ी पर दबाव बना सकते हैं और कहां से एक की जगह 2 रन आप हासिल कर सकते हैं। और जिस तेजी के साथ रन आ रहे हैं ना, उसके चलते फिलहाल इस समय फिनिशर्स दबाव बनाने की पूरी कोशिश करते हुए आखिरी गेंद इस ओवर से बल्ले के नीचे एक बार फिर, और
एक अच्छा शॉट, एक बार फिर से 2 रन और इस 2 रन के साथ 5 ओवर So 50 up for VSPK finishers and in quick time as well. So 2 points you made there. So one being, you said that what teams need to do is not give any pace for the batsman to work with and ask the batsman to work out your own pace. That's something that VSPK did so well yesterday in the initial few overs. They bowled really slow. I mean, the slower bowlers, the spinners, didn't give any air. It was more of flighted deliveries. I mean, there was no pace on offer for the batsman to work with. And when the faster bowlers came in at the back end, they just bowled quick thunderbolts. And the batsmen were caught in the middle. And they couldn't really work them out for boundaries and singles and stuff like that. And they really got caught with the run of play. And it's always that scoreboard pressure when you're chasing. VSPK at the moment looking good. 50 up for them. 5. Sagar, fresh off a half century yesterday, batting on 37, looking set for another big one today. Avish is at the other end, batting on 9. He will play the second fiddle, but he's such an ideal foil for somebody like Sagar. He's got the A game, has got all the gears. At the moment, what he's trying to do is giving Sagar the maximum amount of strike here. Aditi, meanwhile, into a second over. Hasn't been the best of starts for her with the ball. She'll be bowling her second. Has conceded 14 runs in her first. So Sagar on strike, batting on 37 of just 19. And whenever he's out there in the middle, that run rate is always on the higher side. That could be a catch, and that's been put down. That is a costly miss, I can tell you that. It was straight to him. Was a difficult chance. Never easy, those catches, but he didn't have to move an inch, and that's been put down. And Sagar gets a life. Moves to 38. Well, his eyes might have lit up when he saw that juicy full toss. Heaves it away towards that backward square leg region. Will that come back to haunt the LPS? That's down the onside, and that's away from the fielder. That's, I think we'll wait for the umpire's signal. Has that gone all the way? That's 6. Yes, that's a mighty 6, the first one of the day. We haven't seen too many. That's gone all the way. That has traveled the distance. On this occasion, nothing the fielder could have done. That is a brilliant hit. $58, a loss of 3, 5.3 overs, 10.55 current run rate, and projected score is 127.
कदमों का इस्तेमाल एक बार फिर से पटका हुआ वो गेंद गैप में निकलता हुआ एक और बाउंड्री यहां पर मिलेगी और एक बार फिर उठाकर मारा नीचे खिलाड़ी, थोड़ा सा पहले गिरता हुआ वो गेंद और यहाँ विकेट आपको चाहिए। अगर इन दोनों में से किसी एक बल्लेबाज को जल्द आउट नहीं किया तो फिर परेशानियां बनती जाएगी, क्योंकि आप आधा सफर तय कर चुके हैं और पार्टनरशिप महज 18 गेंदों में 32 रनों की 63 रन बोर्ड पर 5वें ओवर तक जिस तरह से डोमिनेट किया था, लेकिन इस ओवर में मौके बने और उन मौकों को छटका भी, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर ड्राइविंग सीट पर नजर आती हुई यहां से फिनिशर्स और ये जो साझेदारी है इस मुकाबले की टर्निंग पॉइंट साबित होती हुई 6 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 65, 3 विकेट के नुकसान पर 34 रनों की ये साझेदारी महज 19 गेंदों में। एक बार फिर से ड्राइविंग सीट पर और अच्छी बल्लेबाजी, ना केवल अच्छी बल्लेबाजी बल्कि एक गेम प्लान दिखा है यहाँ। एक बल्लेबाज जो डोमिनेट करता रहा, दूसरे छोर से भी उसको इस समय मदद मिलती हुई लोविश और सागर की ये जोड़ी चौथे विकेट के लिए 34 रन 19 गेंदों में। और क्या प्लान यहाँ पर रहता है एलपीएस के लिए, क्योंकि अब अगर जल्द विकेट नहीं मिले तो फिर परेशानियां बनेंगी, क्योंकि जिस लय के साथ अभी तक बल्लेबाजी हो रही है किसी भी तरह की परेशानी किसी भी बल्लेबाज को फिलहाल नजर आई नहीं और उसी के चलते फिलहाल एक बढ़िया पोजीशन पर। कल का जो मुकाबला था उसमें शानदार प्रदर्शन रहा था, ना केवल बल्लेबाजों का बल्कि गेंदबाजों के साथ साथ जो गेम प्लान कैप्टन ने बनाया था उसके चलते एक बड़ी जीत हासिल हुई थी फिनिशर्स को, और उसी फॉर्म को फिलहाल एक बार फिर यहां से बरकरार रखते हुए डाउन कर दो। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छा शॉट और हल्का सा वो खिलाड़ी की पहुंच से दूर और एक और बाउंड्री। एक बार फिर आगे की तरफ, एक बार फिर अच्छा शॉट, लेकिन घूमा है गेंद टप्पा बढ़ने के बाद और थोड़ा सा मिस जज, थोड़े से नाखुश जरूर आप कह सकते हैं, क्योंकि ये मौका था उनके पास एक और बड़ा हिट लगाने का। और ये साझेदारी धीरे धीरे बढ़ती हुई फिनिशर्स के लिए, और टॉस जीता पहले बल्लेबाजी और उसके बाद एक बार फिर अच्छी पोजीशन में नितिन गेंदबाज बल्ले के नीचे वो गेंद उठाकर मारने की कोशिश, टाइमिंग उतना अच्छा हुआ नहीं, मिस फील्ड एक बार फिर से रन्स यहां आते हुए। और इस टीम की एक खासियत अभी तक कल जो मुकाबला हुआ था उसमें, और अगर यहां आज डिफरेंस देखेंगे तो जो ओवर्स के बीच में वार्तालाप होता है दोनों ही खिलाड़ियों का, क्योंकि दूसरे एंड से आपका जो पार्टनर है वो अच्छे से गाइड करता है। एक बार फिर अच्छा शॉट नीचे, खिलाड़ी ने इस बार पकड़ लिया ये कैच,
ललचाया, और कहते हैं अक्सर कि अच्छी गेंदों पर विकेट मिलता है, लेकिन कभी कभी खराब गेंद भी आपको विकेट दिलाकर जाती है, और सागर के रूप में एक बड़ा विकेट, 48 रन, और ये जिस तेजी के साथ रन आ रहे थे उसके चलते फिलहाल ये एक बड़ी राहत आप एलपीएस के लिए। 71 रन बोर्ड पर और चौथा विकेट गिरा है। रुक जाओ ना यार, आवाज मिक्स हो रही है भाई, रुको तो सही, मेरे को बोल देना, मैं बता दूंगा। 71 रन, 4 विकेट और एक बड़ा विकेट, और ये विकेट सही समय पर आया है, क्योंकि जो ब्रेक आता है ना कई बार, उसमें बल्लेबाज अपना कंसंट्रेशन खोता है, और उसी के चलते ऑफ स्टंप के बाहर वो गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते हैं। टाइमिंग उतना अच्छा हुआ नहीं, उससे पहले की गेंद में जरूर बाउंड्रीज हासिल की थी, लेकिन इस बार गति में थोड़ा सा किया परिवर्तन, उसी के चलते एक बड़ा विकेट और एक बड़ी राहत फिलहाल अंबिका मैम अगली बल्लेबाज फिनिशर्स के लिए। और अब लोवेश के ऊपर होगी जिम्मेदारी, क्योंकि 19 रन 10 बॉल में और एक शानदार हिट डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 190 का स्ट्राइक रेट, 10.5 से ज्यादा के करंट रन रेट के साथ बल्लेबाजी करती हुई टीम। और कहते हैं ना कि एक के बाद एक विकेट गिरने के बावजूद जो इंटेंशन थी, जो इंटेंट दिखाया अभी तक फिनिशर्स ने इस पूरे ही टूर्नामेंट में, कि रन्स लगातार आए हैं और बल्ले से डोमिनेट करते हुए एक बार फिर पारी, और इस बार जिम्मेदारी जो रहेगी वो लोवेश के ऊपर, कि वो किस तरह से जहां सागर छोड़ के गए हैं उसको किस एंड तक, किस स्कोर पर लेकर जाते हैं। और स्ट्राइक रोटेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा यहां से, क्योंकि गिरता हुआ हर एक डॉट बॉल एलपीएस के लिए राहत लाएगा, जबकि फिनिशर्स जिस टारगेट की तरफ चाहते हैं, क्या मैसेज रहेगा कप्तान का, क्योंकि अभी तक अच्छे से रोटेट किया है, ना केवल विकेट बल्कि रन्स दोनों ही तरफ बढ़िया मुकाबला देखने को मिला, एक बैलेंसिंग मुकाबला अभी तक। और क्या यहां पर गेम प्लान अब आप देखेंगे एलपीएस के लिए, क्योंकि ये डॉट बॉल के साथ ओवर फिलहाल समाप्त होता हुआ 7 ओवर के बाद 71, 4 विकेट के नुकसान पर फिनिशर्स। कुछ करिए बस बस मेरी खोले हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए कोई तो चल जिद करिए तुम पे करिए या करिए हाँ कोई तो चल जिद करिए तुम पे करिए या करिए सात ओवर के बाद 71, 4 विकेट के नुकसान पर, और अब जिम्मेदारी यहां से लोवेश पर, क्योंकि वो एक अच्छी पार्टनरशिप बनी थी यहां से सागर और लोवेश के बीच, और उनके विकेट के बाद जो काम अधूरा रह गया, क्योंकि यहां से अभी भी आपके पास समय है रन्स बनाने का। 71 रन आप जोड़ चुके हैं, फाइटिंग स्कोर आपने बोर्ड पर दे दिया है। यहां से हर एक रन फिनिशर्स के गेंदबाजों और कप्तान के लिए बोनस पॉइंट होगा, और किस तरह से एलपीएस अब वो जो डैमेज हुआ है उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि विकेट आपको यहां से लगातार हासिल करने होंगे, तभी आप दबाव बना पाएंगे, क्योंकि नए बल्लेबाज के लिए आसान होने वाला है नहीं कि आते ही शॉट्स खेलना शुरू करें, और सिंगल्स डबल से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन सवाल है कि अब दोनों ही टीमों का गेम प्लान क्या रहने वाला है।
71 रन 7 ओवर के बाद 4 विकेट। सागर ने एक बार फिर से अपना काम किया, लेकिन उसको फिनिश करने के लिए आने वाले जो बल्लेबाज हैं, जो तरकश के तीर अभी इस मुकाबले को बेंच पर बैठकर देख रहे हैं ना, उनके लिए किस तरह से इस पारी को समाप्ति की तरफ लेकर जाते हैं। 7 ओवर 71, अगला ओवर फिलहाल यहां से शुरू होता हुआ और साझेदारी बनानी होगी, बढ़ानी होगी। एक बार फिर से हल्कातों से खेला और रनिंग बिटवीन द विकेट इस टीम की ताकत रही, और सवाल यह है कि दूसरे छोर से कितनी ज्यादा मदद यहां पर मिल पाती है। सिंगल्स डबल से एलपीएस पूरी तरह से संतोष रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि बाउंड्रीज जिस तरह से मध्य ओवर्स में आई थी, शुरुआती जल्दी विकेट गिरे वीएसपी के फिनिशर्स के, लेकिन उसके बाद उस साझेदारी ने काफी हद तक वापसी कराई है, लेकिन अभी भी वो दिखा दे, कुछ दूसरा वो दिखा। कल वाला अपने जब वो फुटेज भेजी ना, शॉर्ट रिजल्ट को वो चला ट्रांजिशन में चला गया। मैम वही करती है तुमने पहला सेकंड थर्ड मैच। अभी ये वाला लेग वाला व्यू लगा दिया ना, आपको कल मैनेजर बताया होगा, नहीं बताया वो ऑर्गेनाइजर ये है, वो लाल वाली मैडम अंदर है, वहाँ पे आपको लिखा ऑर्गेनाइजर वो बता देना। हाँ उनको आप बता देना। हाँ यहाँ तो टेंट वेंट लगाने में अच्छा गुंजाइश जो है डेढ़ करते हैं, गुंजाइश नहीं रखते, 2 कर देते हैं, 1.5 कर देते हैं, 4 आने वाले टाइम में ना ये 12 ओवर ना, ये 12 ओवर जो इनके होते हैं ना, ये वनडे को फिल करेंगे। शाम तक मिल जाएंगे, मसले होते हैं शाम तक मिल जाएंगे। अब
डाल के भाई खाली छोड़ दिया उन्होंने स्कोर बोर्ड चला जी और भाई डाल देना थोड़ा म्यूजिक डाल दे यार सर्च कर रहा स्कोर बोर्ड 72 उधर मैम उधर ये है ना खाली कर रहा है नहीं सर जी अपने काम करा हाँ तो बाहर जा सकते क्या हुआ रिटायर्ड आउट देखो इतने एक बार जो पिछला हुआ था बॉल सिंगल आया था आउट करना मैडम आई है मैडम खेलती थी भाई इसमें देखते हैं इसमें दिख जाएगा आपको what is the situation what is the situation I want hiring So it's even Stevens at the moment. VSPK finishers are 72 for 4. And LPS would be really relieved that they could break that partnership. Sagar, the dangerous man, is back in the heart. And that's in the air. That's aerial, but that's safe. That's good running. That's good running. A couple of runs. So 2 more runs added to the total. Lavish, he's still out there. He's a dangerous customer. And VSPK have lost half their side. Looks to swing it across towards the offside. Good take by the keeper. That's a dot. That sneaked through. Satya Malik bowling his first over has started well. And VSPK, they still will be looking at a 3-figure total. So the number 7 batsman is out there. Swings it hard. Another couple of runs. And this is where VSPK have been so good. The running between the wickets has been on point. They haven't missed out a single opportunity of converting.
कर दो, बॉल की काउंट्री रहेगी, उन्होंने तो ओवर कर दिया, एक बॉल कम, आउट कर दो यार, लगा ले हैं एक बार यहाँ आप सामने देखो क्या हुआ, ने छक्का मारा क्या हुआ? So start of a fresh over, and he started it well. That's a six. That's a big one as well. Through the onside, massive hit. What a heave that is. A new batter walks out, and look at the confidence. Hits it with aplomb. What a way to start your innings. So Kamal, यहाँ से स्टार्ट करो, he's been given the role of the finisher. And that's down the leg side. Could be a run out. Gets away with that one, does Lavish. Lavish batting in his 20s. This is the 9th over in progression. There was some hesitation between the batsmen. Would have been a big wicket if that run out was effected at the striker's end. So I'd still say VSPK are headed towards a big total, but what has happened is they've lost a number of wickets down the way. Jersey number 18, once again, he's steaming in. Lavish looks for that pull. Misses that, all ends up. Has been hit on the body. And Dushyant quickly gets to the ball, just making sure that the batsmen don't take a single there. This is a good comeback by Dushyant. He was expensive in his first. And was dispatched for a six in the very first delivery of this fresh new over. VSPK batting in their 80s. And I think they'd be really upset with themselves if they don't actually get to that 3-figure mark. They should be looking something in excess of 110 at least. And that would be a very big total, especially first game in the morning. Another couple of runs meanwhile. 2 more added to the total. And Lavish still motoring along nicely. He's moved to 26. Dushyant bowling it pretty much straight, and Lavish, that's thoughtful, just tucks it away towards the onside, gets another single, gets to the non-striker's end, courtesy that single, gets Kamal on strike. Now Kamal, how well has he started this innings? Has hit a six and a monstrous six as well through the onside, and this is why he's been sent lower down the order. That is to dispatch the bowlers at the back end of every single innings. He's been given a role, and he's played that role to perfection. But his job is not over here. After this, 3 more overs to go. And if he stays out there, and look at the running. Look at that running. Immaculate stuff, that. Just drop and run, even though there was no bat involved there. And that shows you the awareness of the non-striker as well. That shows you the striker, the confidence he has on the non-striker as well. Kamal was just responding to the call made by Lavish. Lavish knew that he was running towards the danger end. Quickly breezes through for another run to face the final delivery of the 9th over. Tucks is off his legs, turns it away towards the square leg region, gets an easy single, thinks about a second there, the batsman. And in the end, they don't get it. And that's the end of the 9th. They are 90 for 5 with 3 more overs to go in this innings. VSPK looking good.
90। यहाँ तो शुरू में भी बोलते हैं आखिर में बोलते हैं नहीं तो फिनिशर्स फिलहाल 9 ओवर पूरे होते हुए और 90 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और यहाँ से आखिरी 3 ओवर की पारी बची है और प्रोजेक्ट स्कोर अगर आप देखेंगे तो 120 रन रेट को बेहतर तरह से मेंटेन किया है और आने वाले हर एक बल्लेबाज ने जो इंटेंट है वो क्लियर रखा है अपना कि हम आएंगे और बड़े शॉट्स के साथ रन्स यहाँ पर बनाएंगे फिनिशर्स के लिए, और एक फाइटिंग स्कोर के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक बढ़त की ओर बढ़ती हुई यहाँ से फिनिशर्स की टीम, क्योंकि छोटी छोटी साझेदारियां जिसके चलते फिलहाल 90 रन बोर्ड पर 5 विकेट का हुआ है नुकसान। लोकेश और कमल आखिरी 18 गेंदे किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी होती है, पहला रन तेजी के साथ लेना होगा और ये स्ट्रेंथ है इस टीम की, 1 को 2 में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्जन रेट ना, ये एक रन का आपको जब फिनिश करते हैं आप अपने ओवर्स, वो दर्शाता है, वो स्कोर बोर्ड पर देखता है। कल भी कुछ इसी तरह की रणनीति रही थी, रन्स आपको देखने को मिले थे, बाउंड्रीज उतनी आसानी के साथ आई नहीं थी कल, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर थी। आज बाउंड्रीज भी आई है और रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर रखी है कल के मुकाबले, जिसके चलते यहां पर तेजी के साथ रन आते हुए, ग्राउंड बड़ा है, गैप आपके पास है, अगर बल्ला अच्छे से चल नहीं रहा है तो आप टैप करके भी 2 रन आसानी के साथ ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी आपको बाउंड्री के इर्द गिर्द दिखेंगे, उसमें भी आपको देखना होगा कि किस खिलाड़ी के पास से आप 2 रन जो है वो आसानी के साथ चुरा सकते हैं। पैर निकाला है, उठाकर मारा इस गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से, एक चेज जरूर, बढ़िया कॉल यहां पर और ओवर थ्रो, एक बार फिर वापस भेजा दोनों ही खिलाड़ियों ने। और ये जो तालमेल है राहुल भाई, जो ओवर्स के बीच में आप देखते हैं ना, बल्लेबाज जब आपस में बात करते हैं तो वो दर्शाता है कि आप अवेयर हैं एक दूसरे के खेल को लेकर, अच्छे से आप वॉच कर रहे हैं, ना केवल अपनी बल्लेबाजी बल्कि अपने साथी की बल्लेबाजी भी, और ये टीम के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आप जब इस तरह के बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं ना तो उसमें आपको बाकी टीमों से अलग, जब आपसे पूछा जाता है कि आप में अलग क्या है, तो वो अलग जब ये हाइलाइट्स देखते हैं, जब ये आप लाइव देखते हैं, आपस में बातचीत हो रही है, रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर है, विकेट गिरने के बावजूद लगातार बाउंड्रीज आ रही हैं, और कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप किसी भी चीज़ में अगर आप देखेंगे, किसी के साथ अगर आपको बॉन्डिंग है तो आपका कन्वर्सेशन लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। Yes, that shows you the character of the team. Championship material team. And Satyam, meanwhile, will continue. Heaves it away towards the onside, gets another single. One more run. And yes, that. It's one more run taken. Yes, that's a very valid point that you make, because at times you've seen that the players are caught ball watching. That's an excellent delivery. Beaten all ends up the batsman. And yesterday in a game we witnessed 7 runouts. 7 runouts. That is a big number out of a total of 10. And at times when there is scoreboard pressure on you and you're caught ball watching, it's always important to see and look at your partner, make calls, important calls, and react to calls as well, because sometimes you don't think in the same page. That's a good shot. That's heaved away. That's a stylish stroke as well. He paused. I think that was for the photographers there. That pause. And that's a big hit. We'll wait for the signal from the umpires. Has that gone all the way? In fact, just short of the boundary ropes, 4 runs. And what about that swivel? Such a stylish stroke. Slightly shorter in length. And swings that through the onside. He's looking good, isn't he?
since ball number 1, he's looked to attack. And I think that's one of the reasons why he's predominantly sent in as a finisher, batting low down the order at number 7. That is a very crucial spot, isn't it? Goes again. This time it's more aerial. The bowler couldn't get underneath that one. That was swirling around. Never easy, those catches. And that's 100 up for VSPK finishers as well. 100 up by the end of the 10th over. So 100, in fact 101 for 5 after the end of the 10th with 2 more overs to go. So 101 for 5 after 10. एक बार फिर बल्ले के नीचे वो गेंद, शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ मिस टाइम और इसी तरह के शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि आखिरी 2 ओवर का खेल है और एक सेट बल्लेबाज सही समय पर विकेट मिलती हुई यहां पर, क्योंकि लोवेश 33 रन पर कर रहे थे बल्लेबाजी और ये जो साझेदारी 29 रनों की हुई थी, इसने एक बार फिर से थोड़ा सा स्पीड अप किया था फिनिशर्स के स्कोर बोर्ड को, लेकिन विकेट मिलने के बावजूद आप जो बराबरी वाला मुकाबला देखते हैं ना, कांटे वाली जो टक्कर आप देखना चाहते हैं ना, वो यहां पर मिलती हुई आपको लगेगा जरूर कि फिनिशर्स ने यहां पर डोमिनेट किया है, लेकिन छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर कई बार दिए हैं इस पारी में और उसका इंटेंशन यहां पर ये रहा है, उसका इंपैक्ट ये रहा है कि 10 ओवर कंप्लीट होते हुए 101, 5 विकेट और 11वें ओवर की शुरुआत में यहां विकेट गिरा है। तो 6 विकेट फिलहाल यहां पर गिरते हुए और अब किस तरफ इस स्कोर बोर्ड को लेकर जाते, क्योंकि प्रोजेक्ट स्कोर पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो करंट रन रेट के साथ 121, क्योंकि ये एक फाइटिंग स्कोर और दिन का ये पहला मुकाबला है और Meanwhile, another one. Another wicket. One brings 2 here. And she's gone for a golden duck. That's straight and that's hitting the stumps. So the new batter has been departed. It's 2 and 2 and Nitin is on a hat-trick now. I think that previous delivery, that was a tired shot by Satyam. He was out there. He was batting on 33, but I think he's done his job. Now it's up to the finishers to close things. The new man is out there. Will we see a change in field? Could be remarkable if he gets this one. I think they are seeing the longer picture here, LPS. Here we go, hat-trick delivery.
sensibly tries to work it away towards the onside. That was a very good delivery. Doesn't get a hat trick, but this over has been special so far. Can he close it off well? 3 deliveries, 2 wickets, and 3 dots. The penultimate over of the innings. And he's really put a brakes on the scoring here. That's quick. That's it straight. Drills it towards long off. Just a single off the mark. The new man with that single gets Kamal back on strike. Now Kamal Kaushik has faced 6 deliveries, has hit a 6 and has hit a boundary as well. Batting on 13 and that strike rate in excess of 200 at the moment. Can he provide the finishing touches? He goes for it. He goes big. That's in the gap. The fielders can only watch it go towards the boundary ropes. That's 4 more runs. So Kamal is turning it on for VSPK finishers here. That's his second boundary. Moves to 17. डाउन करे भाई, डाउन करना। 11 ओवर 110, 7 विकेट और फिनिशिंग टच देने की कोशिश करते हुए यहां से कमल सर। 3 बाउंड्री, 1 6, 262 के स्ट्राइक रेट से, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर इस समय है और स्ट्राइक होगी अनिल सर के पास। और देखना रहेगा कि इन आखिरी 6 गेंदों में फिनिशर्स किस तरह अपनी पारी यहां पर फिनिश करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट स्कोर अगर आप देखेंगे तो 120 और ये जो करंट सिचुएशन है ना, ये फाइटिंग स्कोर दिया है। टफ कंपटीशन होने वाला है और इस सीजन का ये दूसरा दिन, पहला मुकाबला। टॉस जीता पहले बल्लेबाजी, बीच में थोड़ी लड़खड़ाई जरूर टीम, लेकिन वो जो साझेदारियां रही है वीएसपी के फिनिशर्स के लिए, और काफी कुछ सीखना रहेगा यहाँ पर विपक्षी टीमों को, क्योंकि जिस तरह से डोमिनेट किया है पारी को, ना केवल बाउंड्रीज बल्कि रनिंग बिटवीन द विकेट, वो एक की फैक्टर रहा है अभी तक इस मुकाबले में। कल भी कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी हुई थी, आज भी उसी अंदाज में एक बार फिर से हल्के हाथों से खेला। और जानते हैं यहाँ पर कितना जरूरी रहेगा कमल सर का स्ट्राइक पर होना, और ये एक समझदारी एक नए बल्लेबाज के लिए, क्योंकि उतना आसान है नहीं जितना आसान यहां से आपको लगता है कि बल्लेबाजी है। टेनिस का वो बॉल उतना आसानी से बल्ले पर आ नहीं रहा, लेकिन आपकी काबिलियत आपको भीड़ से अलग बनाती है। एक बार फिर से बल्ले के नीचे वो गेंद, बल्ला जोर से घुमाया, लेकिन चाहेंगे यहां पर आखिरी गेंद तक स्ट्राइक जो है अपने पास रहे, और कुछ बड़े शॉट्स अगर यहां पर लग जाते हैं तो वो बोनस पॉइंट इस समय रहने वाला है फिनिशर्स की टीम के लिए। और कप्तान के लिए एक बार फिर से पटका हुआ कि डीप पे खिलाड़ी मौजूद, नीचे देखते रह जाएंगे यहां पर और दर्शक बनेंगे, क्योंकि ये दूसरा छक्का इस समय कमल सर के बल्ले से आता हुआ।
अगली गेंद एक बार फिर से बल्ला तेजी से घुमाया, इस बार थोड़ा सा पेस खींचा यहां पर और ये डॉट बॉल। बहरहाल फिनिशर्स इस समय एक बेहतरीन फिनिश की तरफ बढ़ते हुए 117 7 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य जरूर यहां से टफ होने वाला है एलपीएस के लिए, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है क्या यहां पर आसान बनाएंगे इस चीज को। एक बार फिर से क्रीज की गहराई का किया इस्तेमाल और एक और बड़ा हिट, ये तीसरा छक्का इस पारी का। और फिनिशर्स एक बार फिर से अंतिम ओवर्स में दबाव बनाते हुए, और उसका मेन रोल, मेन पॉइंट अगर आप देखेंगे तो कमल कौशिक सर लगातार बल्ले से रन आते हुए, और जहां लोवेश और सागर ने एक बिल्ड किया था, एक नींव बिछाई थी पारी की, उस पर एक बड़ी इमारत आप देखेंगे यहां से, क्योंकि 12 ओवर का ये मुकाबला है और आप जब रन चेज के लिए उतरेंगे तो ये जो टारगेट है ना, ये आपके जहन में जरूर रहेगा और एक मनोवैज्ञानिक बढ़त आपको देखने को मिलेगी फिनिशर्स के, बॉलर्स और कप्तान के पास ये मौका रहेगा कि आप And how's that for a late flourish? Final over. 2 big hits already in this over. They will run. A shy at the striker's end. Will they come back for the second? That is a run out. That is a run out. But they've lost their 8th wicket. But I think Kamal has survived. Kamal was running towards the striker's end. So it's Anil who has been dismissed. But Kamal survives. He's still out there. He will be on strike to face the final delivery. खत्म। In fact, मोहित भाई I think that's a wrap. That's a wrap. VSPK, what they have on the board is 123 for 7. Or rather, 124 for 7, I beg your pardon. 124 for 8 is what they finish with. Which means LPS would require 125 in their quota of 12 overs when they come out to bat. Should be an interesting run chase, this, but you know, it's that final point you make, on what note you finish. And I believe VSPK have finished on a high, but LPS, they've got a very strong batting lineup. वो नीरज
We're ready for the run chase. And Kapil Gupta, the skipper himself, likes to lead his team from the front, be it with the bat, be it with the ball. Opens the batting, bowls the first over, and he'll be bowling his off spinners. And he's a street smart cricketer, as I always mention. He won't give the batsman any pace to work with. He'll toss it up, give it some air, and he'll bowl within the power play as well. I mean, that's a difficult phase for any spinner, isn't it? Now the best of starts, that's a wide. That's a big wide as well. That's a massive wide. So starts off with a wide, and this is a big total that LPS are looking at, 125. Down the leg side, a long hop, heaves it away towards the onside. Hasn't got all of it. The fielder does well. Comes in from deep backward square leg. Keeps it down to just a single. So off the mark, the skipper. And Sakshi, the batter at the non-striker's end. She'll be facing her first delivery. Kapil Gupta bowling to Sakshi. And that's what happens when you're looking to chase down a big total. That required run rate already 10. And Sakshi off the mark. That's a good shot. That's right in the gap. And off the mark with that single. Satyam back on strike. And I still believe this run chase. Satyam is a premier batter, and I'm glad to see him open the innings. I think yesterday he didn't open the innings. And that's where he belongs, right at the top. Because I have a feeling that this LPS team needs him to play the role of the sheet anchor. LPS at the moment 3 for no loss. So Dilip, a big total that LPS are looking at won't be easy. राहुल, सवाल ये है कि ये पहला मुकाबला है इस सीज़न 6 का, दूसरा दिन, पहला मुकाबला, फिनिशर्स की अच्छी बल्लेबाजी, गेंदबाजी पर अब सारा दारोमदार और कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि आप किस तरह से इस गेम की सिचुएशंस को समझते हैं और इस गेंदबाज को आप, क्योंकि यहाँ से अगर आप गति देंगे ना तो बल्ले पे गेंद आसानी के साथ आएगा और फिर कुछ बाउंड्रीज आपको देखने को मिलेगी। और सवाल यही है कि आप गेम प्लान आपका क्या है यहाँ से, क्योंकि बल्लेबाजों ने तो अपना काम पूरा किया, लेकिन यहाँ से गेंदबाजों के साथ साथ आप अतिरिक्त रन पर अंकुश लगाना चाहेंगे, क्योंकि एक स्टार्ट आपको चाहिए। एक कमांडिंग पोजीशन पर इस समय फिनिशर्स हैं, जबकि जो रन्स बोर्ड पर है उसको चेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन शुरुआत हुई अभी मुकाबले की, जिम्मेदारी कप्तानों के ऊपर। कपिल गुप्ता बतौर गेंदबाज पहला ओवर लेकर चलते हुए, और ये एक अच्छे कप्तान की पहचान होती है कि आप खुद को कितना फ्रंट पर रखते हैं एज अ स्कीपर। Yes, he hasn't really got going with the bat this season so far, just 2 matches, but we'll give him the benefit of the doubt, and that's nicely worked away in the gap towards backward point. They'll come back for the second. So brace there. So having said that, he hasn't got firing with the bat and has had a decent outing with the ball, but he's an exemplary captain. Just like I said last season, he's like a field marshal out there in the field. He expects his troops to march along nicely. That's a good shot. Meanwhile, skipper to skipper, and the fielder once again covers a lot of ground. I believe that Sagar there, standing in the deep, saves a certain boundary. Would you imagine he saved 3 runs for his team? That is excellent fielding. And that's something we keep talking about, the third facet of this game, the fielding. You have to be on your toes at all times. Walks it away towards mid-on, gets a single, will keep strike. That's the end of the over. Good over that for the LPS. Good start they've made.
looking to chase down 125. They're 11 for no loss after the first. खाने में डांग खड़ के ओते ओते लड़ाई भारी अर्जन वैली ने अर्जन वैली ने भर जोड़ के गदासी मारी अर्जन वैली ने भर जोड़ के गदासी मारी कुआ गंडा से छबिया पहला ओवर 11 बिना किसी नुकसान के एलपीएस फाइटिंग टोटल थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, लेकिन क्रिकेट के लिए आगे वो गेंद बैक टू द बॉलर, और जो डिफरेंस नजर आएगा वो ये कि अभी शुरुआत है इस रन चेज की, और शुरुआत में गेंद थोड़ा हार्ड रहने वाला है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कुछ बड़े हिट्स आप लगाएं अगले 3 से 4 ओवर। और रनिंग बिटवीन द विकेट एक बड़ा डिफरेंस राहुल भाई अभी तक मेरे को देखने को मिला है, क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट फिनिशर्स की बेहतर रही है। और मेरे हिसाब से शुरुआत के 5 ओवर गेंद थोड़ा हार्ड रहेगा, आपको अटैक करने की जरूरत है, क्योंकि 124 12 ओवर में चेस करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। Yes, certainly. It's not impossible. And I think they're just getting warmed up here, LPS. This is the start of the innings. Just a second over in progression. Lavish will be bowling. Satyam has been out there. And the onus will be on him to carry his bat through the innings. He's got the A game. More importantly, LPS are better off with him playing throughout the innings. That is why I think it was imperative that he came in to open as well today. Looks to assess the conditions. And, everybody, all the batters can play around him as a skipper. And he's, as I've stated numerous times now, he's so pleasing to the eye. Such a good looking batsman. He's good through the offside, good through the onside. He's wristy, at times bottom handed as well. And his stroke making is a treat to watch. Meanwhile, Sakshi gets another single, gets Satyam back on strike. Satyam batting on 6 at the moment. LPS 14 for no loss. And I think so far, even VSPK won't be too unhappy with what has transpired out there in the middle, especially considering the fact that they've got a big total on the board. And this has been the biggest total so far of the 6th season of TCC. Yesterday was comparatively a low scoring affair. Lavish just fine tuning his field here, Lavish. The skipper directing traffic at the moment. How interesting is that? They've got a slip in place. That's not something you see far too often in this tournament, having a fine slip, a conventional first slip. And Sakshi, meanwhile, once again turns it away towards the onside, gets another easy single, and gets Satyam to face the final delivery of the over. Rather, was it the end of the over? Yes, it was. That was the final delivery, and Sakshi will keep strike. That's the end of the second. A decent over that by Lavish, just 4 runs coming off it. LPS, they are 16 for no loss after the end of that. क्राउड का तो आवाज ही नहीं है कल देखा था कम है यार 16 16 2 ओवर कम है थोड़ी बढ़ाओ ना
दो ओवर 16 रन एलपीएस। और फिनिशर्स की अगर मैं बात करूं, जो ऑब्जर्वेशन है ना राहुल भाई, जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो एलपीएस ने ज्यादातर गेंदें शुरुआत में आगे रखी थी, जिसके चलते रन्स आपको पावर प्ले में देखने को मिले थे। 5 से 6 ओवर बेहतर तरह से डोमिनेट किए थे फिनिशर्स ने। और अब बात गेंदबाजी की है तो गेंदबाजी में भी आप डिफरेंस देखिए कि जब भी सत्यम स्ट्राइक पर होते हैं तो लेंथ ना वो थोड़ी सी पीछे रहती है। गुड लेंथ से थोड़ा सा पीछे रखा उस गेंद को, ताकि बल्ले पर उतना आसानी के साथ आए नहीं। और अगर मिस टाइम करते हैं या थोड़ा सा अगर जल्दबाजी करते हैं शॉट्स खेलने की, तो वो चांस बनाता है विकेट का। तो एक गेम प्लान फिनिशर्स गेंदबाजी में आजमाते हुए और अभी तक सफल भी रहे। रन्स उतने आसानी से दिए नहीं है जिस उम्मीद के साथ एलपीएस ने शुरुआत की थी बल्लेबाजी की, क्योंकि एक बड़ा टोटल आप चेस करने उतरे। महज 12 ओवर में 125 आपको बनाने। रिक्वायर्ड रन रेट पर आपकी नजरें जमी रहनी चाहिए, क्योंकि 10.5 से ज्यादा का रिक्वायर्ड रन रेट इस समय एलपीएस को। और किसी एक बल्लेबाज को सागर और लविश जैसी पारी खेलनी होगी, तभी आप So Ambika bowling her first, a very accomplished player in the history of TCC, and that's a good stroke. That's a run away towards the fine leg region. Good effort by the fielder. Has she stopped a boundary there? That was trickling away towards the boundary ropes, and that could be a run out. It is a run out, in fact. So Sakshi has to depart. That's a first wicket that has fallen courtesy a run out. Another run out in this game. LPS have lost their first, but a good hand from Sakshi. She goes for 5. And that happens, you know, in this tournament. You're always looking for that extra mile. So out comes the hard-hitting Nitin. यार एक साला हमने यहाँ बैठा दिया, बगल में स्पीकर लगा दिया यार। ये राहुल भाई क्या, राहुल भाई ये किनके लड़का है? ये इनके ऐसे हो गया। पानी आप पौधे में पानी भी डाल रहे क्या? कल सुबह आएंगे ग्राउंड क्यूरेटर भाई दोस्त। So Nitin is the new man who walks out, a hard-hitting batsman, and he's got his task cut out. VSPK getting their first wicket courtesy a run out. Ambika to Nitin. That's an interesting shot. Just plays it away towards the offside. Kicks it on the full. Just opening the face of the bat. I almost thought that the fielder was handing over the ball to the non-striker. Seemed like it. So Nitin off the mark with that single. LPS at the moment 20 for 105 more required. And he was looking for that region. You could see that. You could sense it coming. That's behind the wickets. That's running away. That will trickle away towards the boundary ropes. That's 4 more runs. That is smart thinking by the skipper.
Had to wait for an eternity and puts it away in some fashion there. Would you believe it? That has gone towards the third man fence. I mean, if you look at it, is it likely? Not on a daily basis you see shots like that. But he's made it happen. 4 more to the total. And 101 more required. Still a long way to go, isn't it, Dilip? जी हाँ, अगर आपको 125 चेस करना है 12 ओवर में तो आपको इस तरह के रन्स की ज़रूरत है। और शुरुआत उतनी तेज़ रही नहीं है, लेकिन जिस तरह से विकेट गिरा और उसके बाद 2 मेन बल्लेबाज आप देख सकते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा वो मिस फील्ड के चलते एक और अतिरिक्त रन यहाँ पर मिल जाएगा। रनिंग बिटवीन द विकेट आपको इसी तरह से रखनी होगी, क्योंकि हर एक रन आपकी टीम के लिए इस टूर्नामेंट में आपकी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि गेंद और रनों के बीच का जो फासला है यहाँ आप बाउंड्री से के साथ साथ सिंगल्स डबल से भी कम कर सकते हैं। और स्कोर फिलहाल 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर से आखिरी गेंद आना अभी बाकी। नितिन और सत्यम फिलहाल इस समय एलपीएस के लिए एक उम्मीद। And how often do you see threes on this ground? Nitin looks for the same region. Almost another run out. Just missing the stumps by a whisker. Could have been the second wicket. Interesting over that. The third one. The 27 for 1 LPS after the end of that one, with 98 more required. तीन ओवर 27 1 विकेट इक्वेशन पर अगर आप नजर डालेंगे तो 54 बॉल्स में आपको 98 रन अभी और बनाने, और रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता हुआ। और इस बढ़ते हुए रिक्वायर्ड रन रेट को आपको अगर मैनेज करना है तो हर एक ओवर में 1 या 2 बाउंड्री के साथ साथ जो सिंगल्स डबल जो विकेटों के बीच की वो जो दौड़ है ना, उसको थोड़ा और तेज करना होगा, क्योंकि रेत की तरह हाथ से ये ओवर आपके निकलते जाएंगे और फिर परेशानी आपके लिए रहेगी, क्योंकि पिछला मुकाबला आपका ज़्यादा कुछ खास रहा नहीं है। और वो कल की बात थी, लेकिन फिलहाल आज इस मुकाबले में आपको एक नई शुरुआत, एक नई टीम, एक नई सोच के साथ वापसी करनी है। फिनिशर्स के बल्लेबाजों ने अपना काम पूरा किया है। अब कप्तान गेंदबाजों के साथ मिलकर फिलहाल लगातार गेम प्लान अपना बनाते हुए, और अभी तक जो गति चाहिए यहाँ पर एलपीएस के बल्लेबाजों को वो गति मिली नहीं है, जिसके चलते वो जो शॉट सिलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली की है। और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस समय, क्योंकि आपको गति मिलेगी नहीं, आपको गैप्स वो तलाशने होंगे। बाउंड्रीज इतना आसान होने वाला है नहीं। अगले 2 या 3 ओवर अगर आप इसी तरह से चलते रहे तो फिर दबाव आपके ऊपर बढ़ता रहेगा, और सिंगल्स डबल से ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। फिनिशर्स को भी वो भी जानते हैं, क्योंकि एक बड़ा मार्जिन उन्होंने सेट किया हुआ है। अभी भी 98 रन दूर इस मुकाबले को जीत में तब्दील करने से एलपीएस। And I'll tell you what's to happen, what's in store for LPS. At the moment, they are giving no pace for the batsmen to work with. And once the batsmen tire down after a certain point, then will come out the pacers bowling their thunderbolts. And that is a very good ploy by VSPK. It's something they've worked on, I think, in the past. And it's been working for them since game number 1. It's an interesting shot. Just a punch towards the extra cover region. Could be a run out. It is a direct hit and it is a run out. We talk about good fielding, but what about direct hits? That is exceptional work by the man coming in towards the extra cover region, attacking the ball and having a shy at the non-strikers, and then that is a big wicket as well. Nitin, he could be a dangerous batsman. Not anymore, because he has to depart. That is a massive wicket in the context of the game.
And look at the awareness of Lavish. Lavish, he let it travel. He lets it go. He knew it was coming straight onto the stumps. That shows you he was aware. And that is exactly what we mean by being switched on at all times. You've got to be on your heels. And that's something that VSPK have done, and that is why they are the defending champions. 94 still required. Shivani, the new batter. She's at the non-strikers end. Is that a wicket? It is! 2-2 now! And it's a dangerous man, Satyam. Oh, well said, Satyam. Never easy to get that kind of a wicket. But he has to go. That's what scoreboard pressure does to you. He had done the bulk of the scoring and he has to depart now for 20. They've lost their third. So VJS and Frobillions, I invite both the captains. We are ready for the toss. The officials are out here. We'll conduct the toss now for the second game. VGS and Frobillions. बत्तीस रन 3 विकेट और एक समय लग रहा था कि शायद यहां से एलपीएस की पारी को संभालने का मौका मिलेगा। सत्यम और नितिन एक के बाद एक विकेट और ये जो ओवर है ना पूरी तरह से टर्निंग पॉइंट बनता हुआ एलपीएस के लिए एक होप थी कि शायद यहां से थोड़ा सा वो जो रन और गेंद के बीच का फासला उसे कम किया जाएगा, लेकिन डायरेक्ट हिट और उसके चलते विकेट मिला है एक बार फिर डाउन द लेग साइड अगेन रनिंग बिटवीन द विकेट डायरेक्ट हिट कुड बी अ चांस। So it's all threes. So it's all threes on the board now for LPS. They're 33 for 3 after the end of the fourth with 92 more required of the next 48 deliveries. It's difficult but not impossible for sure. Saurav is the new batsman who walks out. Both Saurav and Shivani batting on one apiece. हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। कोई बात नहीं, वो करते करते निकलेगा ना। भाई मैं तो अकेले ही करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। Anil Singh Rawat. Yofi bowled up exceptionally well yesterday. He'll be bowling his first. Shivani is the batter on strike. Bowls it quick, bowls it flat. And gets some turn on offer as well. There's a very smart bowler coming around the wicket at the moment. Shivani looked up. Lets it go down the leg side. That's a wide signal by the umpire. So that's required 100 is 11 and a half, in excess of 11 and a half. Never easy, these run chases, especially when you're looking to chase down those 3-figure targets. And that is an exceptional shot. That's in the gap. That might trickle away towards the boundary ropes of the fielder does well. Sagar, he's everywhere. He's all around the park. And it could be a run out. Gets away with that one. Does Shivani. So 3 runs taken. And that's what we talk about, working it in the pockets. Saurav meanwhile facing Anil coming over the wicket to Saurav. That's hit hard. There's protection out there. Avish
gets around it, keeps it down to 2. 26 still required. The required run rate has slightly come down, but slightly is the big word there. That is nicely bowled. That is nicely bowled. Just a whisker away from the leg pole. That was flat, that was quick. And that gripped as well. Sort of gets away with that one. Another couple of deliveries to go in this 5th over. Anil will continue. This time has made some sweet connection. But it's that man at Sagar again. It's really difficult to evade him at the moment on this ground, and they'll come back for the 3rd. This could be a run out, but the fielder slipped. Gets away with that one as well, does Shivani. So another 3, final delivery of the over coming up. 1 run short suggests the umpire, so just 2 will count. Here we go, final delivery, sort of the man on strike. Shivani is the batter on strike. And she'll get a single. That's the end of the 5th. Now we're ready for the toss. The second game. Both the captains are out there. Hand over the mic to Rahul Juneja for the toss. Hello. And now it's a toss time between these 2 players, their strikers, and Robilius Master 2. Yes, we have both the captains, Namita ma'am and yes sir, and Sanjeev sir and Manan sir. And now it's toss time. Let's see, this is the call. Heads, it is. Yes, ma'am. What you gonna to do? We are going to field first. Any specific reason for that? I think we have a strong batting lineup, so why not make use of it? We'll be better at chasing for sure. Any comment? Any take on sir? Oh, it is going to unfold into a very interesting and entertaining day, I believe, with the great teams playing together since morning. So looking forward to the day. Thank you, ma'am. Good luck, ma'am. And yes, sir. Last day you have won the match, although bit controversy was there. And what's planning for today? The plan is to win only and पहले भी बैटिंग करके जीते हैं और अभी तक जो भी टूर्नामेंट हो रहा है बैटिंग फर्स्ट वाली ही टीम जीती है तो विद हिस्ट्री उसे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। क्या टोटल बोर्ड पे लगने वाला? टोटल तो कोशिश यही रहेगी 100+ का। Well, thank you, sir. So yes, news from the center. It's Vijay strikers won the toss and they have elected to bowl first. So yes, good luck to both the captains. Yes, back in action of this first match of today.
good shot वो towards चाहेगा the नहीं फिर offside. मैंने Gets बोला away. चलो चला देना हल क्या बात तो 6 ओवर 47 रन 6 विकेट एलपीएस के लिए थोड़ा सा और मुश्किल बनाते हुए यहां पर, क्योंकि सागर इस मुकाबले में बतौर बल्लेबाज अपना कार्य पूरा करने के बाद अब बतौर गेंदबाज आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। और 47 रन 6 विकेट यानी आधी से ज्यादा टीम इस मुकाबले को डगआउट से देखती हुई, और हालांकि मुकाबला भी समाप्त हुआ नहीं है और ऑन द ग्राउंड खेला गया अच्छा शॉट, एफर्ट्स के पूरे नंबर, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट 2 रन फिलहाल यहां पर जुड़ते हुए एलपीएस के लिए। फिनिशर्स देखना रहेगा किस तरह से इस मुकाबले को समाप्त करते हैं, क्या यहां से ये दूसरी जीत या फिर कुछ टफ फाइट्स आप अगले कुछ ओवर्स में देखने को मिलेगी यहां पर एलपीएस के द्वारा, क्योंकि अभी मुकाबला समाप्त हुआ नहीं, मौका है आपके पास। ऑफ
स्टंप के बाहर। जानते हैं यहाँ पर कि बल्ला जरूर घुमाया जाएगा और थोड़ा सा जो वो रीच है ना बल्लेबाज की, वो जो हिटिंग जोन है उससे थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश, और जरूरी भी यहाँ पर। और देखना रहेगा यहाँ से किस तरह की बल्लेबाजी होती है, लेकिन इस सिंगल के साथ फिलहाल 50 रन यहाँ पर पूरे होते हुए एलपीएस के। विकेट भले ही गंवा चुके हैं, लेकिन इस समय जरूरी होता हुआ कुछ एक रन आपके लिए, और जो जीत और रन के बीच, जीत और हार के बीच का वो जो फासला, उसको किस तरह कम किया जाता है। शुरुआत में उतनी तेजी से रन आए नहीं जिसकी अपेक्षा की गई थी, विकेटें गिरती रही, और यही एक फर्क है आज के इस पहले मुकाबले में। फिनिशर्स जहां विकेट गिरते रहे, लेकिन रनों की गति को प्रॉपर तरह से बरकरार रखा। बाउंड्रीज, न केवल बाउंड्रीज बल्कि सिंगल्स, डबल से भी स्कोर बोर्ड को लगातार बिजी रखा। वहीं दूसरी तरफ एलपीएस के लिए थोड़ा सा मुश्किल बनाया है। बढ़िया गेंद आगे की तरफ, क्लीन बोल्ड। समेटना चाहेंगे यहां से पारी को जितना जल्द हो सके, और वो जो प्लस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं ना, वो जो फासला है, सात विकेट 50 रन पूरी तरह से चाचप होते हुए यहां से, क्योंकि गिरते हुए विकेट फिनिशर्स के लिए यहां पर फायदा साबित होते हुए, क्योंकि आप पॉइंट्स टेबल्स में आज के दिन खुद को टॉप ऑफ द टेबल्स देखना चाहेंगे। और पिछला मुकाबला जो मार्जिन से जीता था, उसके चलते जो नेट रन रेट इस तरह के टूर्नामेंट में अक्सर देखा जाता है, और उस नेट रन रेट को मेंटेन करने के लिए एक बार फिर से यहां पर अपने नाम के हिसाब से, अपने पहचान के हिसाब से ना केवल बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी यहां पर होती है, और पूरा दमखम दिखाते हुए। और टूर्नामेंट है तो एक से बढ़कर एक टीम मिलेगी, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मिलेंगे। आपको खुद को उस भीड़ से बेहतर दिखाना है तो कहीं ना कहीं कुछ अलग करना होगा, और फिनिशर्स अभी तक उस चीज को करने में बेहतर तरह से साबित हुए हैं। और 7 ओवर इस बीच यहां पर पूरे होते हुए 52 रन 7 विकेट के नुकसान पर। सात ओवर 52 7 विकेट, बचे हुए 3 विकेट कितनी जल्द गिरते हैं, या फिर कुछ फाइट्स यहां पर देखने को मिलेगी। एलपीएस के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ एक बार फिर से फुल लेंथ डिलीवरी, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, पूरी तरह से मिस किया लोकेश भाई, पूरी तरह से। गिरते हुए विकेटों के बीच आप पूरा दमखम यहां पर दिखाते हुए फिनिशर्स की टीम, और चाहेंगे यहां
और जल्द समेटा जाए पारी को। फुल टॉस, ये गेंद पोजीशन उतनी अच्छी है नहीं, नीचे है खिलाड़ी, थोड़ा सा यहां पर मिस जज और एक बार फिर पोजीशन उतनी अच्छी थी नहीं, केवल बल्ला डाला उसमें गेंद को और टॉप एज लगा, बैंड नहीं हुए पूरी तरह से और उसी के चलते अगली गेंद एक बार फिर से हल्का सा पीछे खींचा इस बार। और ये सवाल पूछता है अक्सर गेंदबाज, क्योंकि आपने पिछली गेंद फुल टॉस रखी थी और बल्लेबाज इंतजार करता है कि शायद उसी लेंथ पर वो गेंद दोबारा मिले। और वो जो शॉट सिलेक्शन होता है ना, वो एक माइंडसेट होता है बल्लेबाज का, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वो लेंथ पीछे खींच लेते हैं ना, तो फिर बल्लेबाज के लिए भी थोड़ी सी मुश्किलात होती है। और इस समय फंसी हुई नजर आती है एलपीएस की टीम, लेकिन एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन फिनिशर्स ने बढ़िया तरह से मेंटेन किया अपने रुतबे को, अपने नाम को। डाउन द ग्राउंड के लगे, ये बढ़िया शॉट तीर की तरह सीधा, काफी देर बाद एक शॉट ऐसा जिसको देखकर डगआउट में बैठे हुए खिलाड़ी भी थोड़ा सा खुश होते हुए, और बल्लेबाज का आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। कितना पीछे है ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी जो काबिलियत है, आप उसको कितना ज्यादा आप इन आखिरी लम्हों में, इन आखिरी ओवर्स में केवल अपनी टीम के लिए बल्कि आने वाले मुकाबलों के लिए खुद को किस तरह से बैकअप करते हैं, क्योंकि हर दिन आपको शून्य से शुरू करना होता है, और जो बीत गया उसको छोड़कर अगर आप आगे बढ़ते हैं, आगे का सोचते हैं, आगे टूर्नामेंट के बारे में अगर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो गलतियां आज इस मुकाबले में एलपीएस के द्वारा हुई हैं, उस पर एक बार फिर से सोच विचार किया जाना चाहिए। और जब आप वापसी आएंगे अगले मुकाबले में, तो जरूर आप बाउंस बैक करना चाहेंगे, चौंकाना चाहेंगे सभी टीमों को। वहीं फिनिशर्स अपने रुतबे के हिसाब से फिलहाल अभी तक न केवल गेंदबाजी बल्कि फील्डिंग में भी बेहतर तरह से प्रदर्शन किया है, और रोटेशन बेहतरीन रही है अभी तक इस मुकाबले में गेंदबाजों की। हवा में ये गेंद अपने फॉलो थ्रू में अच्छी कोशिश, और ये मुड़कर वापस जाना काफी मुश्किल होता है, और इस तरह के कैचेस के लिए आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, विपरीत दिशा में भागना गेंद डालने के बाद थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अच्छी कोशिश, एफर्ट्स के पूरे नंबर। और इसी के साथ एक और ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ। 8 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है एलपीएस 62, 7 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर इस मुकाबले से आना अभी बाकी, और जो इक्वेशन है वो है 63 रन, 24 गेंदें, फासला लगातार बढ़ता हुआ। तीन विकेट दूर फिनिशर्स इस मुकाबले को जीत में तब्दील करने से, लेकिन सवाल ये कि क्या यहां ऑल आउट किया जाएगा या फिर अंतिम 4 ओवर वो जो गेंद और रनों के बीच का जो फासला उसको कम किया जाता है, क्योंकि ये आपके नेट रन रेट पर इफेक्ट डालेगा। और जब आप टूर्नामेंट के अंतिम पड़ाव पर होंगे और एक एक रन, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऐसे में कल भी कुछ खास रहा नहीं था, आज भी कुछ उतना बेहतर प्रदर्शन रहा नहीं है एलपीएस का, लेकिन कितना इम्पैक्ट डालता है आपके सोच पर, आपके कप्तान की सोच पर, खिलाड़ियों के लिए कितना मुश्किल होगा या कितना इजी बनाया जाता है जब आप अगले मुकाबले के लिए खुद को देखते हैं। मौका ज़रूर, क्योंकि आप अपने गलतियों से सीखते हैं, और जो गलतियां हुई है उन पर कितना सोच विचार एक बार फिर से एलपीएस की टीम करती है। वहीं फिनिशर्स ऐसा नहीं है कि आप टॉप ऑफ द टेबल है या टॉप ऑफ द मैच है, आपसे भी गलतियां हुई है, कैचेस फिनिशर्स के भी छूटे, लेकिन अगर कुछ पारियां अगर आप निकाल देंगे ना फिनिशर्स की बल्लेबाजी में, वो जो की फैक्टर, की प्लेयर्स की अगर आप बात करते हैं, जो मिडिल ओवर्स में आकर न केवल रन्स बनाते बल्कि डोमिनेट करते हैं पारी को। सागर लोविश जैसे बल्लेबाज, कल भी एक अलग ही खेल देखने को मिला था, आज भी पारी को संभाला। तो विपक्षी टीमों को इन दोनों बल्लेबाजों के खिलाफ कुछ ना कुछ गेम प्लान तैयार करना होगा, वरना ये टीम
क्योंकि आप जब किसी टूर्नामेंट में खेलते हैं तो पूरी टीम का योगदान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सवाल ये है कि जिस दिन ये दो बल्लेबाज चलेंगे नहीं, क्या उस दिन फिनिशर्स उसी रुतबे के साथ स्कोर बोर्ड पर रन्स बनाती है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और कहते हैं ना कि हर दिन आपका नहीं होता है, कभी कभी आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वो परेशानियां कितनी जल्द यहाँ पर विपक्षी टीम लाती है, क्योंकि जब आप इस मैच के हाइलाइट्स देखेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ गेम प्लान आप बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से विकेटों में वो गेंद क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बड़े शॉट्स की इस समय दरकार, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दूर रह गए हैं और ये फासला बढ़ता हुआ धीरे धीरे। और 8वें विकेट का फिलहाल यहाँ पर नुकसान होता हुआ एलपीएस। भाई कहता कल वही तो बता रहा हूँ, मुंह पे दिक्कत नहीं है, वो बात भी सही है, लेकिन इसका ना कुछ अच्छा नहीं है। So Kamal into the attack. He'll be bowling the 10th. Dushyant advances down the track. Hasn't got all of it. Turns it away towards the mid-wicket region. They'll come back for the second. Could be a run out. It is a run out. The well said Dushyant has to walk back.
Exceptional fielding again. That was a firearm of a throw. Just heaves it back to the keeper, and all he had to do was clip off the bails, and he's removed the stumps. How quickly he aimed at the wickets, and Lavish was behind the stumps. He's affected that run out. That is a big wicket. I think it's curtains on this innings already for LPS. They've lost their ninth. And the final batter walks out to the middle. Things not really looking good for LPS. It's a gloomy day, and it's been a gloomy affair for LPS as well. Final pair out there. Another run out in this game. Simmer is the new batter. And Hammer bowls it slower through the air. The batter plays it straight back to the bowler. This is a 10th over in the innings. And we're down to mere formalities. It's Upish that's in the air, just away from the fielder. She's off the mark, Simmer, with that single. Works it away towards the extra cover region. And now Shikha will be facing her first delivery. 54 required of 15. Looks pretty unlikely that LPS will chase down this target. And definitely down to mere formalities here. Could be another run out. Oh, he's missed it. He's missed it. And that might run away for 4. Outfield not the quickest, and they get a few runs here. Lucky escape that for the batter. Gets a couple of more runs. 52 still required. This is the 10th over in progression. 52 of 14. Nothing for That's Upish. That's aerial. That could be taken. It is taken. Makes it look easy because it's that man Sagar once again. He's everywhere in the field, and that's it. That's a wrap on this game. They won this one by 51 runs. Another convincing victory for VSPK. And the champions are showing why exactly they've been crowned the champions last season. They've begun on a very bright note this time around as well. And LPS, they will be dejected. So VSPK finishers walking out proud, and they are delighted. You can see the broad smiles on their faces. LPS euphorians, meanwhile, they've had a disastrous outing today.